गुड मॉर्निंग बेटा। सॉरी फॉर लेट बेटा। हरिया बेटा हरिया। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी बेटा 10-15 मिनट लेट हूँ। आज 2 घंटे की क्लास है, उसके बाद इवनिंग में भी आपकी क्लास में लूंगा। हरमनदीप, मनप्रीत, भारती, महक, हर्षित, हरसिमरन, सुखलीन, प्रियंका, अनमोल, पवनप्रीत, प्रियंका, दविंदर, अंशु, गुरलीन, अंशिका, रमनजीत, चेतनदीप, हरजोत। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा ऑल ऑफ यू। बेटा एक इवनिंग टाइम में मैं आपकी क्लास लूंगा, रिवीजन क्लास आपकी। सो प्लीज कम टू ज्वाइन। जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं हुए जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे बेटा। यस बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो बेटा टुडे वी विल स्टार्ट योर रिवीजन क्लास फ्रॉम योर यूनिट नंबर 1। फ्रॉम यूनिट 1, first of all you can remember the units, and your main topic start from your dimensional formula, errors and significant figure। यहाँ पे बेटा आपको क्वेश्चन आएगा, बोल रहा हूं मैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे आपका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला है तो डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर बेटा यू कैन रीड 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट इज चेक द करेक्टनेस of the equation. It's your first part. Second is how to convert one type of unit into another. N2 is equal to M1, M1 upon M2 raised to power A, L1 upon L2 raised to power B, T1 upon T2 raised to power C. This is the formula in which we can calculate one type of unit into another. And now the third one is how to find the expression for an equation. जैसे बेटा फॉर एग्जांपल प्लीज राइट, हरी अप बेटा एक क्वेश्चन राइट करेंगे। जल्दी बेटा ओपन योर कॉपी। यस बेटा, राइट द फ्रीक्वेंसी V, write down the frequency V of a vibration of a stretched string depends upon, see on the right side, depends upon, right, depends upon the length L, second mass per unit, mass per unit, length M, mass per unit length M, and tension T, of the string. Find the expression for frequency. बेटा अभी क्लास में लाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा और कुछ राइट करने हैं। और इवनिंग में बेटा एक लिंक में आपको भेजूंगा,
सॉरी तो जब मैं लिंक भेजूंगा, हो सकता है आपके 4 to 5 या 5 to 6 जो भी मैं लिंक भेजूंगा उसके ऊपर जो क्वेश्चन मैंने राइट करे होंगे, जो आपको अभी दूंगा, वो आपने प्रूव करने हैं और मेरे को बताने हैं उनके आंसर। तो ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे बेटा, 2 मिनट देगा, प्लीज सॉल्व इट। देखते हैं कौन बच्चा बेटा सॉल्व करता है सबसे पहले। हरिया बेटा, जो बच्चे बेटा ज्वाइन नहीं हुए प्लीज अपने बेटा जो फ्रेंड्स हैं उनको मैसेज डिलीवर कर दो कि आपकी रिवीजन क्लास है। इवनिंग में भी आपकी रिवीजन, आज स्कूल में क्लास थी तो थोड़ी बस लेट है इसलिए लेट हो। यस बेटा हरिया, सॉल्व द क्वेश्चन। जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा देन प्लीज राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वेट फॉर ए मिनट बेटा। हरिया बेटा, महक, दविंदर, अंशु बटानिया, गुरलीन, सुखलीन, यस बेटा, रमनजीत। जो बच्चे बेटा जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी है प्लीज बेटा मैसेज कन्वे कर देंगे। उसके बाद जैसे मैंने कल भी बताया था, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि हमने ये नहीं करा है वो नहीं करा है, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा बेटा। यस बेटा जैस्मिन, कुछ क्वेश्चन दूंगा बेटा मैं 4-5 आपको, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, इवनिंग में मेरे को रिजल्ट बताएंगे आप। अच्छा, तो मेरे को लगता है बेटा इसको करने के लिए बहुत सारा टाइम लगाएंगे आप, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। लिसन हियर, द फ्रीक्वेंसी, here is the frequency of a vibrating string depends upon the length L, depends mean directly proportional, length L, here is for your confusion, यहाँ पे आपको बेटा कंफ्यूज करा हुआ है, लिखा हुआ है मास पर यूनिट लेंथ m है m upon l, but here is mass per unit length mean m, and here is the tension T, tension T. For directly proportional we can use K, L, A, M, B, T raised to power C. यहाँ पे बेटा मैंने इसको रेज टू पावर b कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ABC, मैंने यहाँ से ABC बताना है। किन्हीं बच्चों को बेटा अगर पता नहीं है तो यहाँ पे राइट साइड देख रहे हो, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इक्वल होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ, याद रखना है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, देन यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला फ्रॉम दैट रिलेशन। अगर सिंगल टेंशन होगा, नाउ टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, टेंशन किसके इक्वल होती है बेटा, फोर्स के इक्वल। सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड m0 l0 t रेज़ टू पावर -1। राइट साइड a को भी रिमूव करूंगा, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला m0 l1 t0 रेज़ टू पावर a। अब बेटा यहाँ पे किसने बोला था मास पर यूनिट लेंथ मीन m1 l-1 t0, याद रखना बेटा, लिखा m बट क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है मास पर यूनिट लेंथ l, and equation is given only for m, and next one is tension. So you can solve the formula of tension. Tension is equal to F force, force is equal to m into a, and this a is equal to velocity upon time. Similarly, m upon p, as such, this velocity displacement upon time. It means m1 l1 t raised to power -2. Here is power b, here is power c. Is it clear? Now multiply the power m0 l0 t -1 next is equal to m0 la t0 next mb l b t0 next beta mc lc t -2c। ठीक है,
यस बेटा, महक निकाल रही है, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू k। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड महक। यस बेटा, अब आप जानते हैं बेटा, हियर मल्टीप्लाई का सिंबल को पावर्स बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे m 0 है, यहाँ पे m का पावर है b, यहाँ पे m का पावर है प्लस c इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड m का पावर है 0। नेक्स्ट l का पावर है बेटा a, नेक्स्ट l इज माइनस b, नेक्स्ट l इज प्लस c इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड l का पावर है 0। लास्ट बेटा t0 here is minus 2c is equal to minus 1, minus minus can be cancel out, c is equal to 1 by 2। c का वैल्यू आ गया बेटा 1 by 2। अब ये वैल्यू मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, b plus 1 by 2 is equal to 0, that implies b is equal to minus 1 by 2। अब बेटा c और b का वैल्यू आ गया। Now again we can calculate the value of a। Now here a minus b का वैल्यू minus 1 by 2 plus c का वैल्यू 1 by 2 is equal to 0। So बेटा a plus 1 by 2 plus 1 by 2 is equal to 0। a plus 2 by 2 is equal to 0, mean a is equal to minus 1। a का वैल्यू है बेटा minus 1। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा, v is equal to k l minus 1 m b minus 1 by 2 and t c 1 by 2, mean v is equal to k। अब यहाँ पे l minus 1 है, mean 1 upon l, और दोनों के ऊपर 1 by 2 है, जो वैल्यू प्लस की है, t ऊपर और m का वैल्यू माइनस का है। So it's the relation for frequency। यस बेटा, दो बच्चों ने निकाला है, देवेंद्र सिंह एंड महक, वेरी गुड बेटा। तो बेटा यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमने लास्ट में याद रखना है बेटा, एक स्टोक्स लॉ रीड करा हुआ है, अगर आपको याद हो, यू कैन रीड इट, स्टोक्स लॉ। आपने रीड करा है स्टोक्स लॉ नंबर 7 में। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में दो टॉपिक है, ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। देयर आर टू टॉपिक, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो यू नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी v is equal to 2 by 9 r square rho minus sigma upon eta। ये बेटा हमने, तो यहां से आपको न्यूमेरिकल भी बन सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बेटा मेरे पास स्टोक्स लॉ है। सो यू नो स्टोक्स लॉ f is equal to 6 pi eta r into b। आपको हो सकता है बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ बाय डायमेंशनली। डायमेंशनली आपने स्टोक्स लॉ को ड्राइव करना है। तो हाउ टू ड्राइव? नाउ दिस 6 pi is constant, 6 pi is constant, mean f is equal to k eta raised to power a r raised to power b and b raised to power c। अब here eta बेटा ध्यान से देखेंगे, eta is the coefficient of viscosity, coefficient of viscosity। So coefficient of viscosity mean flow of fluid या liquid is known as coefficient of viscosity। तो बेटा eta equal होता है force upon area multiplied by velocity gradient। velocity gradient याद रखने पड़ेंगे बेटा फॉर्मूले। coefficient of viscosity होता है बेटा eta is equal to force upon area multiplied by velocity gradient। So eta is equal to, solve करेंगे, f is equal to m into a upon area is equal to length square, और velocity gradient होता है बेटा velocity upon length। यहाँ पे velocity ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय l ऐड कर दिया, l रिमेन एक कैंसिल हो गया। eta is equal to m upon l multiplied, here is velocity, displacement upon time multiply acceleration velocity upon time। सॉल्व करो बेटा इसको,
टी के साथ टी कट गया, eta is equal to m upon l into l. Similarly, here velocity, displacement upon time, l remain cancel out, so eta m1 l minus 1 t raised to power minus 1. स्टेप बाय स्टेप बेटा आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना आना चाहिए। यस बेटा, निश्चित रंजन, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। यस, अब बेटा यू कैन कैलकुलेट द फार्मूला f is equal to m into a। मैं बेटा ये हर एक टर्म को सिंगल टर्म को सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप सिंगल टर्म को सॉल्व करेंगे तो बेटा गलती का चांस बिल्कुल मिनिमम रहेगा। अगर आप उसको क्रैम करेंगे बेटा तो गलती हो सकती है। सो here m into b upon t into d upon t means the dimensional formula is m1 l1 t minus 2 is equal to eta का फॉर्मूला है m1 t minus 1 raised to power a, radius mean length raised to power d, velocity mean m0 l1 t minus 1 raised to power c। now multiply the power, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, मतलब मेरे पास ए बी सी का वैल्यू 1 1 1 1 आना चाहिए, ठीक है। सो बेटा परविंदर सिंह बता रहा हूँ, मैंने ये बोला कि अभी भी क्लास रखा होगा, इवनिंग में भी एक लिंक भेजूंगा, तो बेटा यू कैन अटेंड द क्लास प्रॉपर्ली फर्स्ट ऑफ ऑल, और सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो हियर t minus 2 is equal to ma l minus a t minus a, next m0 lb t0, next m0 lc t minus c। now multiply the power, here a, next 0 is equal to left hand side a is equal to 1। मैंने बोला a b c का वैल्यू 1 आना चाहिए, next minus a plus b plus c is equal to left hand side l is equal to 1, next minus a minus c is equal to minus 2। a का वैल्यू यहां पुट करेंगे, minus 1 minus c is equal to minus 2, minus c is equal to minus 2 plus 1, minus c is equal to minus 1, it means c is equal to 1। अब b का वैल्यू निकालेंगे बेटा, यहां पे पुट करेंगे minus 1 plus b, और b का वैल्यू 1 is equal to 1, ये कैंसिल हो गया, b is equal to 1, mean f is equal to k eta 1 r1 b1, और k का वैल्यू पुट करते हैं 6 pi में 6 pi, तो f is equal to 6 pi eta r into b। is it clear? so next लिखेंगे बेटा कुछ क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं। राइट द क्वेश्चन बेटा, करिए बेटा जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, और बेटा मैं आपसे रिस्पॉन्ड करूंगा इसका। ए बुलेट, राइट ऑन, ए बुलेट इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? ए बुलेट traveling with a velocity 16 meter per second penetrate a free track trunk trunk and comes to rest at a 0.4 meter, find the time during the retardation, यस बेटा, ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है मोमेंटम मीन थर्ड यूनिट रिकॉइल ऑफ ए गन, वहां से क्वेश्चन है, तो जल्दी से करेंगे, देखो कौन बच्चा करता है। मैंने बोला कि बुलेट ट्रैवलिंग विद ए वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड penetrate a free trunk and comes to rest after 0.4 meter, find the time taken during the retardation। आपने करना है सेकंड क्वेश्चन, मेरे को आंसर लिख के भेजते जाएंगे बेटा। सेकंड
यस बेटा, लिखो बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, जानते हैं बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, याद रखना पड़ेगा बेटा। प्लैंक्स कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी, स्पीड ऑफ लाइट सी and gravitational constant g and gravitational constant capital G are used to form a unit mass capital M, a unit mass capital M. How is mass related to G? Yes बेटा, आपने करना है बेटा, क्वेश्चन आप करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं करवाऊंगा। यस हरी अप, वेट कर रहा हूं बेटा। Palvinder 0.1 सेकेंड एंड 1 मीटर। यस कितना निकाल रहा है बेटा? 0 पॉइंट। यस बेटा अनदर वन। हाँ जी बेटा, और कोई बच्चा? यस सुप्रीम कॉर 0.05 सेकेंड। अनदर वन बेटा। जल्दी से जल्दी बेटा, जल्दी में। यस और कोई बच्चा बेटा जिसने सॉल्व करा है? हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे? इसने बोला हाउ m इज रिलेटेड टू g, मीन m इज इक्वल टू c a g b f c। पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। जो लास्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल, जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट। इसको निकालना है बेटा, सॉल्व कर लेंगे। यहां से रिलेशन बना प्लैंक्स कांस्टेंट एट h स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are used to form a unit mass m. How is mass related to g? How is mass related to g? कर लेंगे बेटा। यस बेटा, 0.05 सेकेंड इज द राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन भी बेटा डायमेंशनली प्रूव करना है आपने। डायमेंशनली ये मैंने आपको हिंट दे दिया। m इज इक्वल टू c रेज टू पावर 8, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेज टू पावर b, h प्लैंक्स कांस्टेंट रेज टू पावर c। आप जैसे मर्जी इसको ले सकते हैं बेटा, h के ऊपर पावर a भी ले सकते हैं, c के ऊपर पावर b भी ले सकते हैं और g के ऊपर पावर c भी ले सकते हैं। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, योर राइट आंसर इज क्या आएगा बेटा? वो आपने निकालना है बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट वन बेटा, अगर बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो टाइप कर सकता है, नहीं कर सकता है तो मैं करवा दूंगा। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है तो मैं करवा दूंगा बेटा, जल्दी से बोलेंगे। जल्दी से बोलेंगे बेटा। चलो नेक्स्ट, अगर कर लेंगे तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट है बेटा, इवन व्हेन ए ट्रेन, राइट बेटा, इवन व्हेन ट्रेन is falling vertically downward, vertically downward, vertically downward, the front screen of the moving, sorry, rain, sorry, not a train, rain is falling vertically downward, the front screen of a moving car, the front screen of a moving car, थोड़ा सा रीजनेबल क्वेश्चन है बेटा, फ्रंट स्क्रीन ऑफ ए मूविंग कार गेट वेट while the back screen, जो पीछे वाली स्क्रीन है, बैक स्क्रीन remain dry while, यस बेटा, कोई बच्चा आंसर देना चाहे? हाँ जी बेटा, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस बेटा, यस बेटा। तो अगर नहीं दे सकते हैं बेटा तो प्लीज राइट द मैसेज। ये आपका बेटा फ्रंट पोर्शन है और ये आपका बैक पोर्शन, ठीक है। फ्रंट इज बैक एंड द रेन इज ड्रॉपिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी va, and here is the inclined plane making BC, इसको बोल दिया मैंने, और यहाँ पे BR और मेकिंग एन एंगल, इसके ऊपर जो रेन आ रही है with an angle theta because it traveling in the forward direction, and here is BC and here is the downward direction and here is the slanting surface, that's why the screen does not bend in the last portion. So we can say that VR is equal to minus J is equal to या minus BR J vector, and similarly BI या A is equal to minus I vector, that is equal to minus B से J vector। अगर दोनों की RC कॉम्बिनेशन निकालेंगे इट मींस BR minus BC, ठीक है। तो बेटा इट मींस minus BAJ minus BCJ, it means B vertical component of the ray R, that is equal to BCI minus BCJ। मीन बेटा यहाँ पे जो एंगल रहेगा मेकिंग एन एंगल थीटा, और यहाँ पे जो सरफेस है वो स्लैंटिंग सरफेस है, कार जो है आगे की तरफ मूव करती है, और ये बिगर एंगल थीटा जो है ये जो डायरेक्शन में चला जाता है, जिसके कारण ये जो ड्राई रहता है और ये वेट कर जाता है। यस बलविंदर दे रहा है, बिकॉज़ द रेन स्ट्राइक
the car in the direction relative velocity with a range and respect to car. Very good beta, very good. Then you can write in here this relation. अगर नहीं write करना है, then you can draw the diagram and taking this angle, and according to this diagram you can explain this concept. Yes beta. Next one. Similar question है बेटा. Similar, right? When an observer is standing on earth, right बेटा? हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन है तो explain. Because the fall vertically downward in a same direction than relative velocity of train met car. Very good बेटा. यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन है, right? Next one. Next is, when an observer is standing on earth, when an observer is standing on earth, observer जो है आपके ऊपर स्टैंड कर रहा है, the tree and house appear, the trees and house appears stationary to him. Therefore, when he is sitting, he is sitting in a moving train, all these objects appear to move in backward direction. Why? वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है. So this can be depend upon your unit number 3rd. So बेटा यहाँ पे रीजन बोल रहा हूँ बेटा कि for a stationary observer the tree and house या relative velocity of tree and house is 0. Listen carefully. मैं ये बोल रहा हूँ for a stationary observer the relative velocity of tree and house is 0. For the observer is moving in a train. अगर ऑब्जर्वर जो है वो बेटा ट्रेन में मूव कर रहा है, देन तो क्या होगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी गेट चेंजेस. तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो बेटा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. मीन पहले लिखा है व्हेन ए ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ एंड ट्री एंड हाउस अपीयर स्टेशनरी टू हिम. क्यों स्टेशनरी दिख रहे हैं, बिकॉज इट्स रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. And for the observer is moving in train, the relative velocity of tree and house is negative. So these objects appear to move in a backward direction. बेटा listen carefully again. मैंने बोला कि अगर ऑब्जर्वर जो है ट्रेन में मूव कर रहा है, then the relative velocity of the tree and house is negative. That's why these objects appear to move in the backward direction. तो जिस बच्चे को नहीं पता लगा बेटा, देन यू कैन राइट मैसेज कहां पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो. पहले लिखा है कि ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ एंड ट्री एंड हाउस अपीयर्स स्टेशनरी टू हिम, देयरफॉर ही इज सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन. जब यहां तक है वो आप बोलेंगे द रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. नाउ देयरफॉर ही इज सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन, देन ऑल द ऑब्जेक्ट मूविंग अपीयर टू मूव इन ए बैकवर्ड डायरेक्शन. अब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहे हैं, because the observer is moving in a train, the relative velocity of the tree and house is negative. The house is negative. So therefore the object appear to move in the backward direction.
So beta, this is your next question. So beta, move on next. Move on next. एक आपने बेटा एक्सप्रेशन निकालना है, शो दैट internal energy of an ideal gas as U is equal to P gamma upon gamma minus 1. कौन सी इक्वेशन है बेटा? एडियाबैटिक थर्मोडायनेमिक्स, एक बच्चा बोल रहा था अभी, थर्मोडायनेमिक्स का कंडीशन है बेटा, इक्वेशन ऑफ एन थर्मोडायनेमिक्स, इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस. यस बेटा, कर लेंगे बेटा. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस को चेंज करना है. Then you can write here U is equal to, show that the internal energy is equal to, आपके पास किसके इक्वल है? तो आपको पता है गामा is equal to Cp upon Cv. Cp means specific pressure and Cv means specific volume. हाँ जी बेटा, कर लेंगे, ये करवा दो. हाँ जी बेटा, बोलो जल्दी. कर लेंगे बेटा, बोलो जल्दी. अगर बेटा कंफ्यूजन है तो आइडियल गैस प्रूव कर लें, या U is equal to mu Cv into T, Cv is equal to R upon 1. ठीक है, so U is equal to mu RT डिवाइड बाय अंडर माइनस 1. अगर इक्वेशन को आपने न्यूट्रलाइज करना है, then you can write this equation also. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इंटरनल एनर्जी ऑफ एडियाबैटिक इक्वेशन आप देख लेंगे एक बार. अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो बेटा फिर पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे. हाँ जी बेटा, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, लिख लेंगे कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है. ठीक है, नेक्स्ट. अब बेटा जो आपके एजर्शन और रीजनिंग भी बता देता हूं थोड़ा सा. ठीक है, एजर्शन एंड रीजनिंग मैंने आपको बताया बेटा पेपर का पैटर्न जो आपने फॉलो करना है. द पैटर्न ऐसे है 1 to 10 सेक्शन ए 1 to 10. आपके पास अभी बेटा 18 को आपका एग्जाम है, कल भी आपको 2 या 3 घंटे की क्लास लगेगी, तो घबराना नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो अच्छे से करो. यस, 1 to 10 वन वर्ड या बेटा एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, या डेफिनेशन आ सकती है, या जस्ट 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है. फिर 11 to 14 आपके एजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है. एजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो कुछ एजर्शन और रीजनिंग फिर बता रहा हूं बेटा, एजर्शन और रीजनिंग बता रहा हूं. तो लिखेंगे बेटा एक एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन. यस बेटा, राइट. यू कैन राइट द क्वेश्चन ऑन एजर्शन एंड रीजनिंग. लिखो बेटा एजर्शन में, एजर्शन रीजन आपको पता है क्या लिखना है. एजर्शन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process for ideal gas change its
internal energy, change its internal energy, change in internal energy, change in internal energy is zero, is zero. Reason है, reason no heat is supplied to the system, is supplied to the system, no heat is supplied to the system or rejected by system or rejected by system, rejected by system in an isothermal process, in an isothermal process. But you know what is an isothermal process? Isothermal process is that process in which temperature remain constant. So बेटा जी यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास एजर्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आपने ऑप्शन ए बी सी टिक करना है। ऑप्शन ए पहले मैंने बताया था कि ऑप्शन ए कहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन ए तब टिक करेंगे जब एजर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू होगा और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। सेकंड बी ऑप्शन उस टाइम टिक करेंगे assertion and reason both are true but reason is not correct explanation of the assertion। and third one जो आपके पास तीसरा है, थर्ड वन आप तब टिक करेंगे सी assertion true and reason is false, ठीक है। और डी ऑप्शन both are assertion and reason both are false, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। कर पाओगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाओगे तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड assertion में लिखा है assertion pressure है dimensionless of energy density, pressure है जो प्रेशर है बेटा, प्रेशर है dimensions of energy density, dimension of energy density, ठीक है। ये assertion में reason energy density is equal to energy upon volume, energy upon volume। तो ये तो बेटा बता सकते हैं सभी बच्चे मेरे ख्याल। गुरलीन सिंह बोल रहे हैं सी, बहुत अच्छे। हाँ जी बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे को। प्रेशर है डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, व्हिच इज द राइट आंसर। बेटा जब आप आंसर करेंगे तभी आगे चलूंगा मैं। व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? बताएगा कोई? वेट कर रहा हूं बेटा। गुरलीन सिंह सबसे पहले आंसर देता है और गलत आंसर देता है। हाँ जी बेटा, और कोई बच्चा? गुरलीन सिंह बेटा सोच लिया कर पहले क्या करना है। हाँ जी बेटा, वेटिंग फॉर देवेंद्र सिंह ए। हाँ जी बेटा, अदर? एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम।
अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मीन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी मीन वर्क डन और वॉल्यूम को लिख दिया मैंने एल क्यू। तो बेटा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एल क्यू, m into a into d upon l cube, a b upon t, b l upon t, mean 2l remain cancel out, m1 l minus 1 t minus 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है किसका, एनर्जी डेंसिटी का। प्रेशर का निकाल के देखो बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया is equal to m into a upon l square, m upon l square, velocity upon time, velocity, displacement upon time, it means m1 l minus 1 t minus 2, it means both have a same dimensional formula। तो क्या बोलेंगे बेटा, यस बेटा मैं ये बोलेंगे बेटा कि इट्स ऑप्शन ए, assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion, it's option number A। तो बेटा जी थोड़ा सा ध्यान दो भाई। हाँ जी बेटा नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन कोई बताएगा बेटा, महक बेटा, पलविंदर, दविंदर सिंह। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब बेटा आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, इसके बाद ये तो क्या आपके 1 2, ये 1 से लेके 10 तक सेक्शन ए और ये आपके 11 to 14 ये बेटा सेक्शन बी, इट मीन इट कंटेन ए 14 मार्क्स, इट्स योर सेक्शन नंबर ए। तो ये बेटा 8th यूनिट तक आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन रीड कर लेने और अब हम सेक्शन बी में मूव करते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी, बी में बेटा बताया था मैंने पैराग्राफ, पैराग्राफ टाइप ए, टाइप ए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप के सॉरी 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा और एक पैराग्राफ के बेटा 5 ऑप्शनल रहेंगे, मीन 5 ऑप्शन एमसीक्यू टाइप, और उनमें से आपने कोई 4 करने, मीन 2 पैराग्राफ से आप कोई 4 क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक या पास्कल लॉ के ऊपर, अगर आपको याद हो व्हाट इज दैट पास्कल लॉ, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ क्या बोलता था बेटा, इफ वी अप्लाई द प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ एनी कंटेनर या एनी ऑब्जेक्ट then it transmit the pressure in all direction। जैसे फॉर एग्जांपल एक रबड़ बॉल ली थी बेटा मैंने, एक रबड़ बॉल ली है, रबड़ बॉल के अंदर मैंने क्या करा, पेन्स के साथ, पेपर पिन के साथ छोटे छोटे होल कर दिए बेटा, ये हॉलो बॉल है बेटा, रबड़ का हॉलो बॉल है, और इसके अंदर मैंने पेपर पिन के साथ छोटे छोटे होल कर दिए बेटा। अब होल करने के बाद मैंने इसमें एक बेटा बड़ा होल कर दिया जिसमें आपकी फिंगर एंटर हो सकती है, और इसको मैंने पानी में डिप कर दिया। जैसे बेटा मैंने पानी में डिप कर दिया तो इसके अंदर पानी जो है क्या हो गया, फिल हो गया। अब जब आप इसको बाहर निकालोगे और जहां पे आपकी फिंगर एंटर हो सकती है, आप फिंगर को हाई प्रेशर के साथ इस बॉल के अंदर लेके जाएंगे, तो बेटा जहां पे आपने पेपर पिन के साथ होल करे वहां से पानी जो है इक्वल प्रेशर के साथ बाहर की तरफ आएगा, मीन इट ट्रांसमिट द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ए पास्कल लॉ। तो बेटा पास्कल लॉ, या अब पास्कल लॉ का जो एप्लीकेशन था, एक था हाइड्रोलिक ब्रेक और एक था हाइड्रोलिक लिफ्ट। ऐसे बेटा हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, यहां पे आपने मूवेबल पिस्टन रखा है
हो सकता है इसके ऊपर आपको कोई पैराग्राफ आए और क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आए, ठीक है, इसके ऊपर जो लेवल है वो कैसा रहेगा। सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस पैराग्राफ एंड फाइंड द क्वेश्चन अपॉन इट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपको ये भी बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं बेटा आपको। हाँ जी बेटा, तो जैसे पास्कल लॉ हमने रीड करा है बेटा, क्या रीड करा है, पास्कल लॉ। तो बेटा पास्कल लॉ के ऊपर जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि इन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, लिसन केयरफुली, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। तो अगर मैं, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, अगर एक साइड में प्रेशर अप्लाई करूंगा उसका इफेक्ट दूसरी साइड जाएगा। मीन जैसे हम इस मूवेबल पिस्टन को प्रेस करेंगे इसका इफेक्ट जो है दूसरी साइड में जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ए हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज ए टू लिम्स, इसमें टू लिम्स है, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में टू लिम्स है, एरिया एक का ए है और एक का 2a है, इसका एरिया ए है और इसका एरिया 2a। इज इट क्लियर? सो फोर्स F is applied over a limbs on area A, मतलब जो एरिया ए है उसके ऊपर आपने फोर्स F अप्लाई कर, ठीक है। अब जब आपने लिम्स ए के ऊपर फोर्स F अप्लाई करा जिसका एरिया ए है, टू लिफ्ट ए हैवी कार, जैसे बेटा वर्क स्टेशन सर्विस स्टेशन के ऊपर कार को लिफ्ट करते तो ये कार को लिफ्ट करेगा, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय पिस्टन इज P1। जब आपने इसको फोर्स अप्लाई करा तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन ने मूव करा P1 प्रेशर के साथ, ठीक है। अब पिस्टन अगर P1 प्रेशर के साथ मूव कर रहा है, देन डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन P2, तो ये जो पिस्टन P2 है ये P1 मूव करा, सॉरी, और ये जो पिस्टन P2 है ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा। दिस इज योर क्वेश्चन। डायग्राम गिवन होगी, एग्जांपल दे सकता है ये, जैसे x 2x x बाय 2, हाँ जी बेटा क्या हो सकता है, x बाय 2 या 4x। तो आपको बताया था मैंने बेटा ऐसे, जब आपने क्या करा था, एक कंटेनर लिया था, कंटेनर में मैंने 3 साइड मूवेबल पिस्टन लगाए थे, तो यहां से आपने आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया कि यहां पे आप इसको कर सकते हैं। सो क्लीन फॉर अरेजर्शन और रीजनिंग का आंसर दे दिया। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट। अब बेटा एक आपने दो पैराग्राफ आएंगे बेटा, ये दोनों पैराग्राफ आपने अच्छे से रीड करने हैं, और जो सेकंड पैराग्राफ होगा, जैसे आपने बॉयल लॉ पढ़ा होगा, बॉयल लॉ, चार्ली लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उसके ऊपर तो आपने बॉयल लॉ रीड करा है, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट, जिसमें टेंपरेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बेटा मैंने इसके ऊपर एक पीवी डायग्राम भी बताई है, पीवी डायग्राम भी बताया हुआ है आपको, हाउ टू सॉल्व द पीवी डायग्राम। सो पीवी डायग्राम, हियर इज volume and in this side is pressure. So here is two graph M1 and T temperature remain constant M2 and T. The question is PV diagram of ideal gas of an ideal gas. PV diagram of ideal gas, two different masses M1 and M2, two different masses M1 and M2, दो different mass है बेटा इसके, M1 and M2 are drawn at a constant temperature, are drawn in a diagram at constant temperature बेटा कांस्टेंट है इसका,
So state whether आपने स्टेट करना है whether m1 is greater than m2, m1 is greater than m2, m1 is greater than m2 या m2 is greater than m1। हाँ जी बेटा, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ जी बेटा, करेंगे। चलो बताना मेरे को, इवनिंग में क्लास लगेगी, उसमें आंसर पूछूंगा इसका। ठीक है, ये ग्राफ भी बनाया, पीवी डायग्राम में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा। यस, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ए रैंडम एरर। एनीवन डिफाइन रैंडम एरर बेटा? एनीवन एक्सप्लेन इट, राइट इन ए चैट बॉक्स। व्हाट इज ए रैंडम एरर? रैंडम एरर क्या है बेटा? एंड लीस्ट काउंट एरर। बेटा लीस्ट काउंट जानते हैं आप? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट एरर किसको बोलते हैं बेटा? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जब आप रीडिंग लेते हैं तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्यों निकालते हैं? ताकि जो आपकी रीडिंग आए वो एरर फ्री आए, जो रीडिंग आए दैट इज एरर फ्री। तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा कोई बच्चा, व्हाट इज ए रैंडम एरर? रैंडम एरर बेटा, बेटा आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो फिर क्या कहूंगा आपको? रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर किसको बोलते हैं बेटा? तो रैंडम एरर आप जानते हैं बेटा, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है बेटा, जिसने बनाया है उसने इसकी लेंथ रखी है 15 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला आपने इसकी मेजरमेंट करनी है और इसकी लेंथ बतानी, तो आप क्या करते हैं? 1 टाइम 40, 1 टाइम 16, 1 टाइम 30, 1 टाइम 70 प्लस 40, इतने टाइम की आप रीडिंग निकालते हो, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 5। तो जो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आए दैट इज इक्वल टू योर एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ए रैंडम एरर। रैंडम एरर मींस the error in which occur irregularity and the random in magnitude and direction is called a random error. And next one is your least count error. Next one is least count error. This error is due to the limitation imposed by this error is, इसको बता रहा हूँ बेटा least count को। This error is due to the limitation, is due to the limitation, due to the limitation imposed by least count, imposed by least count, imposed by least count of the measuring instrument, of the measuring instrument। तो रैंडम के ऊपर भी बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एन रैंडम एरर, व्हाट इज एन लीस्ट काउंट एरर, एंड राइट इट्स एग्जांपल आल्सो। महक लिख रही है दीस आर नोन एज ए चांस एरर। यस बेटा, महक रैंडम एरर आर एरर व्हिच आर ड्यू टू अननोन कॉज। वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल डालता हूं। सरफेस टेंशन आप जानते हैं बेटा, हमने रीड करा हुआ है। सरफेस टेंशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, उसका एग्जांपल देना है, उसकी एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको डाल रहा हूं, राइट बेटा, ये आपने इवनिंग में मेरे को सॉल्व करके बताना है। जब इवनिंग में आपकी क्लास लगेगी, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, the potential energy
potential energy of a 1 kilogram particle of a 1 kilogram particle free to move along free to move along x-axis free to move along x-axis is given by is given by EU is equal to x square x4 divided by 4 minus x square divided by 2 joule. ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी गिवन है जूल. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल the total mechanical energy of the particle is 2 joule. तो पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो 2 जूल है. फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल. फाइंड द मैक्सिमम speed of the particle in meter per second. Energy of particle is 2 joule. Energy of particle is 2 joule. Find the maximum speed of the particle. Find the maximum speed of the particle in meter per second. ये तक छोड़ दो. आपने मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है इसकी मीटर पर सेकंड में. चलो वेट कर रहा हूँ 2 मिनट बेटा. देखते हैं आप में से कौन बच्चा इसको करता है. 2 मिनट वेट कर रहा हूँ. 2 या 3 मिनट वेट कर रहा हूँ बेटा. बहुत सारा टाइम पड़ा है. आपकी कोई क्लास नहीं बेटा. आ जाओ. हरी अप. आपकी बेटा जी कोई क्लास में और जल्दी करेंगे. बेटा जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करोगे बेटा कैसे पता लगेगा जल्दी करना है. सेकंड यूनिट वैसे क्वेश्चन है ये आपका. हाँ जी बेटा कोई बच्चा ट्राई कर रहा है तो वेट करो कि नहीं करो. प्लीज टाइप द मैसेज.
Yes बेटा, सुखलीन कौर B2 is equal to 9 by 4 and B2 is equal to 3 under root 2. हाँ जी बेटा, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट वन, कई बच्चे तो बेटा पता नहीं क्यों आते हैं टाइम पास करने, ना तो जवाब देते हैं यस 3 by under root 2। वेरी गुड महक। हाँ जी बेटा, बाकी बच्चे बाकी बेटा, हाँ जी हरियर बेटा, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। देवेंद्र सिंह 3 अंडर रूट 2। बेटा अभी भी चेक कर सकते हैं। बेटा जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करोगे आगे नहीं चलना है मैंने। हाँ जी बेटा जल्दी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होती है बेटा? 1/2 mv स्क्वायर होती है बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट दैट केस, तो bx या ux इज इक्वल टू, आपके पास कंडीशन है x4 डिवाइड बाय 4 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दिस इज योर कंडीशन, सो यू कैन ड्राइव इट। यहां से हमने बेटा dx अपॉन dt, dux अपॉन dx करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा देख रहे हैं मैंने, यहां से क्या करोगे? दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0 बेटा। मीन 4x क्यूब अपॉन 4 माइनस 2x by 2 is equal to 0। Here x cube minus x is equal to 0, x square minus 1 is equal to 0, x is equal to plus minus 1। हाँ जी बेटा आगे क्या करना है पूछा है इसने कुछ और। x is equal to plus minus 1 आ रहा है, then you can calculate the total energy, mean P maximum potential energy। बेटा हरियर बेटा, महक, देवेंद्र, प्रियंका, हरमनदीप कौर, प्लीज चेक योर आंसर। सुखलीन कौर, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 जूल दी है बेटा। सो 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2। So 1/2 mass is 1 kilogram into B maximum square is equal to 1/4 is equal to 9/4, B maximum is equal to under root 9/2, under root 3/2 is the right answer। Very good बेटा, very good, बहुत अच्छे बेटा। ये जो बेटा यही है 4-5 बच्चे, सुखलीन कौर वेरी गुड बेटा, महक, देवेंद्र, प्रियंका, हरमनदीप कौर वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छे बेटा, ऐसे करना है आपका क्वेश्चन में। बाकी बच्चे अपनी क्यों आते हैं बेटा? टाइम पास करने आते हैं या तो अपनी वीडियो ऑन करके बेटा भाग जाते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? यही है बेटा 4-5 बच्चे जो रिस्पॉन्स करते हैं, और बाकी को मेरे को लगता है कहीं से कॉपी करते होंगे गूगल से।
उठाया और डाल दिया, ये करते होंगे शायद। जब आपके मार्क्स जो हैं अबव 60 आ रहे हैं, इट मीन्स देयर इज देन सम प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बेटा। चलो बेटा एक क्वेश्चन और लिखेंगे, राइट। अब मैं बेटा लिखूंगा बोर्ड के ऊपर, ए ट्रक टोस, TOWS, a traveler of mass, a traveler of mass 1200 kilogram, 1200 kilogram at a speed, 10 meter per second, at a speed 10 meter per second. Tension in the coupling, या tension is 100 Newton, tension is 100 Newton. What is the power extended as the trailer? What is the power extended on the trailer? Find the tension on the coupling. Find the tension on the coupling when the truck ascends, ASSENDS, ascends a road having an inclination 1 meter, inclination 1 meter, as shown in a diagram. Assume that frictional resistance, assume that frictional resistance on the inclined plane is same as that on the level rule, as that on the level rule. ये डायग्राम देख रहे बेटा, it's B, C and A making an angle theta. This is 6 and this is 1. अब देखते हैं बेटा कौन अच्छा है। एक बार रिपीट फिर कर रहा हूं क्वेश्चन को। ए ट्रक टॉस ए ट्रॉलर ऑफ मास, ट्रक के साथ एक ट्रॉली लगी हुई है, ट्रॉलर ऑफ ए मास 1200 किलोग्राम at a speed 10 meter per second. Tension in the coupling is 1000 Newton. 1000 Newton. What is the power extended on the trolley or troller? Find the tension on the coupling when the truck ascends a road having an inclination of 1 meter as shown in a diagram. Assume that frictional resistance on the inclined plane is same as that on a level rule. As that on a level rule. वेट कर रहा हूं बेटा आपका, हरी अप। बेटा जो बच्चे जा रहे हैं अभी और आपकी कोई क्लास नहीं है, हरी बेटा हरी अप।
बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, लेंथ ही नहीं है, बहुत इजी है। हाँ जी बेटा, पहले पावर का फॉर्मूला लगाएंगे जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स मीन 1000 multiplied by velocity is 10 meter per second, mean it is equal to 10 raised to power 4 watt। ठीक है, अब इसमें आपको पता है mg cos थीटा और mg sin थीटा पढ़ा हुआ है आपने। मीन mg sin थीटा is equal to वेट है इसका 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/6। करेंगे बेटा सॉल्व इसको। हाँ जी हरियर, सुखलीन कौन बोल रही है? 1 2 3 4 यहां तक निकाल दिया, आगे सॉल्व करना है बेटा, आगे सॉल्व करेंगे। निकालो बेटा, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F is equal to mg sin theta plus Fp frictional force। ठीक है, मीन 1200 multiplied by 10 upon 6 that is equal to 2000 न्यूटन प्लस मीन कितना आ गया? F is equal to 3000। ठीक है, F is equal to 3000। आगे निकाल रही है महक 29960। हाँ अब ट्रॉली का निकालना है बेटा, निकालो। मीन टेंशन आ रहा है हमारे पास 3000। योर आंसर इज 3000 बेटा। दविंदर वेरी गुड बेटा। यस बेटा महक, यू आर approximate equal to your answer, that is 3000। so clean, yes beta, very good beta। very good beta। yes beta, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। फिर इवनिंग में बेटा एक वीडियो आपको लिंक भेजूंगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो आ जाएंगे, जिनको नहीं इंटरेस्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टोक्स लॉ मैंने बता दिया बेटा, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। देखो बेटा, एक ग्राफ शो दैट द लेंथ, लिखेंगे बेटा राइट। सर आई हैव टेक g is equal to 9.8। ओके बेटा, but your answer is right, problem beta। if you calculate 2960 then you can write approximate equal to 3000। you can write approximate 3000। very good बेटा। यही है बेटा, 5-7 बच्चे हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी पता नहीं टाइम पास कर जाते हैं, और वही बच्चे हैं जो क्लास प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं, और बाकी बच्चे गायब हो गए। उनको पता है कि फायदा कोई है नहीं, समझ को आता नहीं है, ना उन्होंने क्लास अटेंड करनी है, ना कोई रिस्पॉन्ड करना है। यस बेटा। यस नेक्स्ट, द ग्राफ शो द बिहेवियर ऑफ लेंथ ऑफ द वायर। द ग्राफ शो द behavior of a length of wire in the region
in the region for which the substance obey Hooke's law. You know what Hooke's law? Stress is directly proportional to strain. Yeah, extension is directly proportional to load. What are P and Q? What are P and Q representing in the graph? In the graph. So here is the graph. Here is Q. Here is P. And graph is something like that. Okay. This is your first part. And move on second. आपने बताना है ना second is stone of mass. The stone of mass M is tied to one end of a wire of length L. The diameter of the wire is the diameter is given D. The stone is now rotated. The stone is now rotated in a horizontal plane. And makes an angle theta with the vertical. If young modulus, पढ़ा हुआ है आपने young modulus? If young modulus of the wire is by capital Y. पढ़ा हुआ है बड़ा normal stress upon longitudinal strain. Then find the increase in length. Increase in length of the wire in terms of y. लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको ट्राई करेंगे जल्दी. If the diameter of a brass rod is 4 mm and young modulus 9 into 10 raised to power 19 Newton per meter square, then how much force is required? Force is required to stretch it by 0.1%. 0.1% of its original length. चलो करेंगे भाई. महक बोल रही है P and Q represent stress and strain. P and Q represent stress and strain.
यस बेटा राइट। प्रियंका पी एंड क्यू अप्लाइड फोर्स एंड एक्सटेंशन हुक्स लॉ। चलो बेटा सेकंड का आंसर बताओ बेटा, बाकी छोड़ो, ऊपर वाला छोड़ दो, सेकंड वाला। करिए बेटा। इस टाइप में करना है बेटा। चलो आप ट्राई करेंगे बेटा, इवनिंग में जो लिंक भेज रहा हूँ उसमें आपसे आंसर पूछता हूँ। सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जो बच्चे अभी क्लास में हैं, 5 बच्चे हैं मेरे ख्याल। बेटा प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, जो स्टूडेंट है, हरियो मार्क योर अटेंडेंस। हरियो बेटा, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मार्क योर अटेंडेंस। प्रियंका, कल भी बेटा आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, इवनिंग में आपको मैं लिंक भेजूंगा। तो अगर आर यू इंटरेस्टेड देन सुप्रीम कौर, यस बेटा। महक, आर यू देयर? दविंदर, बेटा प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। हरमनदीप कौर, यस। हाँ जी बेटा जल्दी। देविंदर सिंह, महक, आर यू देयर? अंशु पठानिया, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस।